दिस इज़ द ब्रांड न्यू Honor 9X, Honor का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन, और इस फ़ोन की प्राइस है अराउंड 39,000 रुपीज़। ये दराज के ऊपर एक्सक्लूसिवली लॉन्च हुआ था, लेकिन अब ये लोकल मार्केट्स में भी अवेलेबल है। और Honor के अगर आप फेसबुक पेज पर जाएँ तो वो इसके ऊपर काफ़ी सारी डील्स लगाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू बाय दिस फ़ोन आप इसके साथ कुछ गुडीज़ भी ले सकते हो। ऑल दैट इज़ ऑसम। लेकिन इस फ़ोन के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा पेज लाइक कीजिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द Honor 9X। बिल्ड क्वालिटी वाइज आई एम इन लव विद दिस फ़ोन। इट लुक्स प्रिटी डार्न ऑसम। जो इसकी बैक है वो स्पेशली अमेजिंग है। इट्स डिफरेंट देन एनी अदर फ़ोन आई हैव एवर यूज्ड। जो इसकी बैक है वो ग्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है, एंड द वे इट रिफ्लेक्ट्स लाइट इज़ अमेजिंग। इसके पीछे एक पैटर्न है दैट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फोन्स। You always get a different pattern depending on how light hits the back of the phone. और जो light का reflection है that makes an X which looks really goddamn awesome. Honestly, I can go on and on about how much I love the back of this phone. As I always say, मुझे different looking phones बहुत पसंद है, and the phones that try something different, that try something new, I really appreciate them. और इस फ़ोन के अंदर ये चीज़ है. This is pretty much as good as it gets. कोई और फ़ोन इस तरह की बैक नहीं दे रहा that I know of. तो अगर आप भी मेरी तरह के हो जिसको डिफरेंट लुकिंग चीज़ें पसंद हैं और who wants a phone that stands out, then I think you'll be happy with this phone as well. It kind of looks like those loading screens from old 8 or 16-bit games, or also the back is slightly curved at the edges. So when you're holding the phone, it gives this very seamless and very premium feeling in the hand. One thing that I like about the frame of the phone is that it comes with USB Type-C port. फ़ोन के फ्रंट पैनल के बारे में बात करते हैं. In my opinion, I think it looks equally amazing. It's a 6.59 inches panel and it's a completely bezel-less display. Thing is, क्योंकि I'm very passionate about tech, I have used pretty much every type of display. I have used phones with huge bezels, tiny bezels, notches, punch holes, you name it, मैंने इस्तेमाल किए हुए. And the type of display that I like the most is completely bezel-less. At the end of the day, tiny bezels हो या notch हो या punch hole हो, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर distractions हैं. और इट्स सच अ सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस अगर आप एक फ़ोन यूज़ कर रहे हो जिसके ऊपर कोई डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ ना हो. सो आई एम रियली ग्लैड दैट दिस फोन इज़ गिविंग दैट कम्प्लीटली इमर्सिव एक्सपीरियंस इतनी थोड़ी प्राइस के अंदर. ये कम्प्लीटली बेजलेस डिस्प्ले बनाने के लिए दे हैड टू पुट अ मोटराइज्ड कैमरा पॉपअप एट द टॉप ऑफ द फोन. एंड द थिंग दैट्स स्पेशल अबाउट दिस कैमरा पॉपअप इज़ दैट इट्स वेरी ड्यूरेबल. पीपल आर यूजिंग दिस टू ओपन वाटर बॉटल्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ क्रेजी स्टफ. बट ये आपको दिखाता है कि ये कैमरा पॉपअप कितनी ज़्यादा फोर्स और प्रेशर सस्टेन कर सकता है, एंड दैट्स रियली अमेजिंग. However, मेरी जो एक कंप्लेन है इसके साथ वो ये है कि it's not really as fast as I would like it to be, and there is no face unlock. I have used other phones जिनका pop-up कैमरा इतना फास्ट है कि they can do a good job of face unlock. लेकिन I'm not really too critical about this क्योंकि the phone still has a very fast fingerprint sensor. Overall, जैसा मैंने कहा, I love the build quality of this phone. This phone looks very different. ये stand out करता है और ये completely bezel-less display दे रहा है at this price, which is amazing. कैमरा वाइज दिस फोन हैज़ अ ट्रिपल कैमरा सेटअप इन द बैक. इसके अंदर एक 48 मेगापिक्सल सेंसर है, एक 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस है और एक 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है. एज फार एज द क्वालिटी गोज, जो 48 मेगापिक्सल सेंसर है दैट टेक्स फोटोज विद एन इंसेन अमाउंट ऑफ डिटेल और क्लैरिटी, एंड द कलर्स लुक रियली गुड एज वेल. मुझे मेरी फोटोज़ पसंद हैं टू बी वेरी सैचुरेटेड, वेरी वाइब्रेंट विथ वेरी पंची कलर्स, एंड आई गेट दैट विद दिस फोन. वाइड एंगल कैमरा की वजह से ये काफ़ी वर्सेटाइल कैमरा एक्सपीरियंस है. अगर आप लैंडस्केप की फ़ोटोज़ ले रहे हो तो यू कैन कैप्चर मोर ऑफ द लैंडस्केप विद द वाइड एंगल कैमरा, या अगर आप एक ग्रुप फोटो ले रहे हो यू कैन कैप्चर मोर ऑफ द पीपल विद द वाइड एंगल कैमरा. अल्टरनेटिवली अगर आप मैक्रो शॉट्स या क्लोजअप्स लेना चाहते हो तो उसके लिए भी दिस कैमरा इज़ रियली गुड बिकॉज इट एनहेंसेस दोज विद द AI फीचर्स. स्पीकिंग ऑफ AI, Honor has really good AI features. Scene detection works really well. ये आपके environment के हिसाब से best settings automatically apply कर देता है. Also the portrait mode is really amazing with very good edge detection. इसके अंदर जो front camera है that's a 16 megapixel sensor and it also takes really high quality photos. Once again यहाँ पे भी portrait mode बहुत अच्छा है and it gives your photos more depth. मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर सेल्फी कैमरा मुझे जैसा मैं असल में लगता हूँ उससे बेहतर दिखा दे तो आई एम हैप्पी विद द फ्रंट कैमरा, और ये फ़ोन ये काम करता है. ओवरऑल द कैमराज ऑन दिस फोन्स आर रियली अमेजिंग. यू कैन गेट सुपर शार्प, सुपर डिटेल्ड, हाई क्वालिटी फोटोज, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैप्पीली रिकमेंड द कैमरा ऑफ दिस फोन.
When it comes to the performance, this phone has a Kirin 710F processor और इसके अंदर 6GB of RAM और 128GB of storage है. Also, इसके अंदर एक SD card slot भी है which supports up to 512GB of storage. So you probably never have to worry about storage on this phone. As I said in my Huawei Y9s review, the Kirin 710F is a really good processor. It's fast, it's stable, and there's not much lag in using the phone. Going through the UI is super smooth. और इसके अलावा दिस फोन कम्स विद Android 9 एंड EMUI 9.1. EMUI 9.1 के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद हैं. द लॉन्चर हैज़ एन ऐप ड्रॉअर दैट कीप्स एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर जेस्चर नेविगेशन है. You guys probably know I love gesture navigation. It makes the phone feel way smoother and fluid. और ये चीज़ इस फ़ोन के अंदर भी सच है. So if you want an even more smoother experience, turn on gesture navigation. मेरी EMUI के साथ जो ओनली कंप्लेन है एट दिस टाइम वो ये है कि इसके अंदर अभी भी डार्क मोड नहीं है. आई रियली विश कि इस फ़ोन के अंदर डार्क मोड होता क्योंकि डार्क मोड इज़ जस्ट सो मच मोर कंफर्टेबल फॉर योर आइज़. बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट्स अ डील ब्रेकर क्योंकि दे कैन ईजिली ऐड दिस विद अ सॉफ्टवेयर अपडेट. आई होप कि इसके अंदर EMUI 10 का अपडेट जल्दी आए और उसके अंदर डार्क मोड एनेबल्ड हो. लेट्स टॉक अबाउट गेमिंग. The Kirin 710F allows you to play pretty much any game you like on this phone. Light हो या graphic intensive हो, ये handle कर सकता है. And there's nothing distracting on the screen, so you get a really immersive gaming experience. Games like PUBG or Call of Duty feel awesome on this giant bezel-touch display. And the performance of those heavy games is really good as well. So overall, I'm happy with the performance of this phone. I didn't face many issues, and I just wish कि इसके अंदर dark mode होता. All in all, this phone gives great experience performance-wise. As I said before, इसके अंदर एक 6.59 inches LCD display है और इसका resolution 1080p है. So there's plenty of clarity and the colors look really good as well. Although there is a slight blue tint on the screen, it's not very noticeable और आप उसे used हो जाते हो थोड़ी देर use करने के बाद. Again, since the display is completely bezel-less, watching movies or TV on this display is such an immersive experience. I love watching stuff on it. It's just something that you have to experience for yourself because it's really satisfying. Overall, the display on this phone, while it's not an AMOLED display, ये काफ़ी अच्छा है और इसके कलर्स काफ़ी अच्छे हैं. And it's perfect for an immersive media experience. There's a 4000 mAh बैटरी on this phone and on normal usage मैं इसको 2 दिन तक easily इस्तेमाल कर सकता हूँ. लेकिन जो इस फ़ोन का सबसे बिग इशू है वो ये है कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग नहीं है. इसके अंदर सिर्फ स्टैंडर्ड 10 वाट चार्जिंग है और मेरी ओपिनियन के अंदर हर मिड रेंज फ़ोन के अंदर 18 वाट फास्ट चार्जिंग अब होनी चाहिए. लेकिन इस कंप्लेन के अलावा ओवरऑल आई लव दिस फ़ोन एंड आई फुली रिकमेंड इट. इट्स अ ग्रेट डिवाइस विद ऑसम बिल्ड क्वालिटी एंड अ रियली ग्रेट डिज़ाइन दैट स्टैंड्स आउट. Like this is one of my favorite looking devices of all time. It has a great camera and great performance. And it's giving all of those in a very affordable price. Like this is one of the best device जो आप ले सकते हो कम से कम price के अंदर. And that's really saying something considering the competition. So if you are someone who is interested in buying this phone, I don't think you can go wrong with this one. Thank you for watching. Please subscribe to my channel for more videos and I'll see you in the next one. Peace.